Social governance of risk is still, I think, weak. We guys are not as well healed as it used to be. हमारे पास उतने पैसे नहीं है. हमें अभी बहुत काम करना बाकी है सोशल गवर्नेंस में. फॉर्मल गवर्नेंस में भी बहुत काम करना बाकी है. सो दो चैलेंजेस मैं कहूंगा इसमें. पहली तो बहुत अच्छी चैलेंज है, व्हाट वी कॉल गुड चैलेंज. A good challenge is that our states have a lot of money flowing in from the central government through various schemes and mechanisms, but there are lots of strings attached to it. So आपको PDNA करनी पड़ेगी, तब कुछ resources आएंगे, है ना? So all the formal sort of mechanisms being and practices and policies being put up by the central government to provide funding to the state governments, all the strings attached. I think that's a challenge. Do we have the capacity to service that? That's the first challenge. And that's a good challenge, I think. Let's accept it and let's move on it. Second part of the challenge is climate change, environmental degradation, which is a global challenge, but doesn't matter. It is also a challenge for my village, for my district, for my block. And that's where I think we need all our DDMOs to move forward on localization of the agenda. We don't care whether the temperature is rising 1 degree, 2 degree, 3 degree, but temperature should not rise in my district, in my village. And I think that's the kind of challenge which is very, very important. We got to live with the changing climate. All these global things will keep happening, all the negotiations, all the give and takes, green economy and what kind of economies. But what's happening to my village? What is happening to my district? I think that's where we can take the social governance and the formal governance together. And that's the second piece of the challenge. 3 things I would suggest that we should do immediately. In terms of acquiring new capabilities. First is get your basic data structures on damage and loss integrated in all the productive sectors, all the social sectors, so that we are able to do PDNAs every year, year on year, regularly. We should be ready to do a PDNA at a drop of a hat. I think that's the kind of capacity we require. Number 2, we got to have a mechanism for building partnerships. Government alone, as I said, you need social governance. Formal governance is not enough. So we got to have a mechanism to build partnerships with the civil society, with the UN, with private sector, academia. Today you're being hosted by Amity. Thanks Amity for that. And I think that's the kind of partnerships which we need to have a little more formally. Is there a mechanism with government of Maharashtra to have partnerships? And I think that's very important. And third piece of this capability acquisition would be to make plans to enable social governance of risk. Social governance of risk should not remain as an ad hoc thing. There should be a plan. Preferably at district level. Preferably there should be all the Apada Mitras and all the good work which you have done in Maharashtra that need to be integrated into it. And if you have a plan, then there is a responsibility to track it, monitor it. So if your Apada Mitras are working on such a large scale, are they achieving results? Are they doing what you're expecting, and so on and so forth. So I think get your data systems, get your monitoring systems in place. That's the three sort of capabilities I would suggest we should acquire. Now UNICEF and other partners, I think we are all ready on all these 3 challenges. We'll be happy to collaborate with you. I know we're going through a bad recession right now. But this recession is not going to last forever. Things will improve and resources will flow. And finally, I think I would like to address the DDMOs, all our hardworking DDMOs in the districts. They are our leaders on the front line. And I think
we expect them to take leadership. Not only listen to the district magistrates and all that, we want them to take leadership, and remember that all the civil society organizations, all the coordination mechanisms, they are behind you, and set up your coordination mechanisms in the districts, build capacities, track results, report them. eh? Uh, how important is reporting and communication? I think you have a big sort of expert sitting here, Karen. She'll advise you how to do that a little more professionally. I think it's very important that we communicate the results of all our works consistently, and so that Maharashtra is seen as a leader. Ultimately, once the DDMOs take leadership, I think Maharashtra takes leadership. I'll stop here. Thank you. Thanks for having me here. Thank you. Thank you, sir. So now I would request Honorable Director, Sir, Disaster Management Unit, Mr. Appa Sodhulas, sir, to guide us. So yesterday I had asked a few things to introduce him. So he politely said, "No, ma'am. सब मुझे जिस तरीके से जानते हैं उसी तरीके से जानने दो." सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. सो सब सर के लिए प्लीज तालियां हो जाए. थैंक यू. Good afternoon, everyone else. Just madam told me that I am going to guide you. You know, we all are file pushers, in fact, with iron faces in the office. And I'm glad that I'm feeling like sitting in the Himalayan ranges at third floor with beautiful ambience. And I'm very happy to see these guys, well turnout dresses, charming faces here. And this is very rare we are witnessing in the day-to-day activities of the government. In fact, sir, Mr. Sahara, I think, Sarabjit, he has nicely explained what is required at art level, particularly from the government level, NGOs, community. He used the word social governance. Yeah, that is very good term. I have read the term that is no one is safe when everyone is not safe. All is not safe. And while coming over here, I was reading the posters along the roadside of G20. One globe, one family, one future. Yeah, that is very nice tagline for G20. And as an administrator, you see, 1 or 2 years we are transferred to some other department. Fortunately, I am feeling now I was reluctant to join on this post, but after joining this, I feel very lucky that I'm get always chance to interact with scientists, consultants, technocrats, good governors, then NGOs, very active NGOs in Maharashtra, NGOs like Piconet. So at the outset, I would like to compliment this Piconet, ma'am, RISE, MET for giving such a wonderful ambience, and all of you for joining this, not only physically, but those who are joining online for this roundtable conference. As an administrator, not as an administrator, but a manager, because my term is, I'm being assigned the task of directing the tasks in the department, but right up to the village level. My, at field level officers are DDMOs, district magistrates are there. We call them DDMA, and my office is recognized as SDMA. For these, 3-4 months, what I learned is the biggest challenge. Of course, in government also, challenge is coordination. Interdepartmental coordination, intergovernmental coordination, and establishing consistent coordination with functional NGOs in the field. Before joining this, I was having
in mind that disaster administration means after happening any disaster or any hazard, I was having the concept of just doing the panchanamas or surveys, compiling the data, submitting to the government, and extending relief or carrying out the rehabilitation. But when I started interacting with my UNICEF consultants, UNDP consultants, and the NGOs like Madam and the UNICEF person sitting here, I came to know it touches all the departments. Disaster is the department. It touches even, PWD, irrigation department, meteorology department. So many terminologies are there, which we have not able to learn even during our preparation of competitive exams. So coordination is a big challenge. Then communication is it plays a key role. We all of you know, but correct communication, that is during the golden hour. There is a terminology in disaster management that right communication or right extending the help during golden hour is a challenge. And although sir has told that Maharashtra is very progressive, very good managing, but I'm not still happy in terms of communication right up to the community, right up to the citizen. It should be citizen centric, and citizen participation is must. I read the terminology that is community disaster management. I am in search of a NGO which has its own disaster management plan with respect to particular geographic location or considering the density of population or the climatic condition prevailing at that particular location. Because unless we have the active participation of the community, particularly in rural areas pertaining to cyclones, then landslides, hailstorms, or very simple hazards like road accidents, snake bites, scorpion bites. First aid also works. I have noticed one of my DDMO and Abda Mitra in Amravati district or somewhere in Parbhani, madam, with the use of that first aid, they have saved the life of 2 persons from snake bite, and also some, because of grievous injury happened due to accident. This is a role that is being played by our Abda Mitras. They are actually social workers who are not giving any kind of remunerations or salary to them. This is what the change happening. And on behalf of government, as a director, I do have certain limitations and my administrative and financial powers. But I assure you all, after reading over SDG, Prime Minister's 10-point program, G20, agenda, and after interacting with so many peoples, yes, it is required to government come forward to play a proactive role for communication, for connecting people, having a good network all across our state. Sir has rightly said, when we work globally, you must concentrate why the temperature is increasing in your district. If we think at individual level, at each district level, then only it is possible to handle this kind of, climate change issues. This is a global issue, in fact, and we need to start at our level. Wherever we may be posted, wherever we may be working, we need to awaken the people, awaken the educated, youths. We need to get them participated in such activities, and that is a challenge before us. I am happy that so many functional NGOs are there in Maharashtra working for even interior places like Ratnagiri, Sindhudurg, even in Palghar districts. And I'm quite lucky to have my DDMOs. All 36 DDMOs are very, very active, despite having so many, adversities at their level in terms of having ample staff, ample technology, mobility, constraints are there, but they are working like anything as a social workers. I'm proud of my DDMOs.
Yes. Also district authorities. I would like to, we are going to consider as a one family as such. I have prepared, madam, 17, formats are there. What is the challenge was to know exactly what kind of threat is there in a particular village or in a particular taluka. Unless we know that, and that requires huge data, that is back-end data for last 5 or 10 years. I have tried to compile those data from my field officers. Yeah, I have prepared 17 formats, and you will come to know the data of every village, and that village is prone for flood, the frequency of flood, the level of flood, and I have classified even circles. There are 2,127 revenue circles. Circle means group of 10 villages in every block. I'm having 2,127 circles, and circle wise rainfall data is with me. I have classified all these circles. How many circles are out? There are 358 blocks are there in Maharashtra. 36 districts are there. 349 urban centers are there. You will surprise. This is the second urbanized state in our India, next to Tamil Nadu. And 349 municipal councils and municipal corporations and Nagar Panchayats. Whereas how many talukas are there? 358. That means towns and number of talukas are at par, equal with each other. This is the scenario in our state particularly, and we are procuring. We have already procured so many, equipments and life-saving things. Those are required for disaster management. We have engaged one project management unit at state level called Palladium. We are engaging the public sector undertaking, the government of India's for consultancy and for even as a implementing agencies. And I welcome everybody's inputs. I'm going to have a good website. You will surprised to know that there is no dedicated and dynamic website for Maharashtra. This. Okay. Okay, madam. Okay, no issue. I will sum up within 2 minutes, ma'am. Yeah. Want to listen to others as well. Okay. Visible to others who are online, please. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, you are visible. Yes, thank you. Thanks a lot. I will not take much time of yours. I will sum up within 2 minutes. So my point is, each one of Prime Minister's 10-point program, wherein I'm having consultations with departments. Echo is going on. Someone's mic may be there, on. Please. I'm having consultation meeting with all the departments particularly who are engaging in creating the infrastructures, particularly PWD, irrigation department, industry departments, because first point in Prime Minister's agenda point is every developmental work should have disaster management component. That is mandatory. You'll surprised to know how many deaths are in Maharashtra. There were 1,097 incidences in Maharashtra in last year, from 1st of January 2022 to 31st of December 2022. 1,097 incidences were there. 825 casualties are there. And you will surprised to know out of that, 333 are due to road accidents. We are neglecting that one. So many blind spots are there. 217 are due to lightning. See, 187 are due to flooding. And 127 deaths, again 127 deaths are happened due to drowning. Where at, tourist places, maybe in Ratnagiri or in. So the vision is resilient Maharashtra, resilient village, resilient community,
resilient individual, resilient houses, particularly in cities like Mumbai. There were 83 incidences of collapsing of houses in, but this is not figured in particularly as disaster. We are not considering it. We are taking just earthquake or landslide or hailstorm, like these things. But we need to concentrate. We need to, sensitize. We need to even make the alert. The authorities, municipal authorities like Mumbai, BMC, yes, they are carrying out the surveys. They are identifying the houses which are about to, collapse at any point of time, dilapidated nature of buildings. They're pointing, but that is not effectively been implemented. That is why we are, losing so many lives. This is the concern which I'm seeing. My vision is, yes, Maharashtra should be resilient. Everyone's vision there. But after 3 years, I look forward to see a 0 deaths, particularly during flood season. Due to reckless driving and crossing of the rivers, where flooding is happening, deaths are happening in rural areas. You may be seeing in the TV that youths, because of adrenaline secretions and daring, they drive their cars or vehicles or bikes. They go and they're washed away. This is the concern. So for this regulation, in terms of having policy decisions by GR or by amendment in the acts, local acts, also by awakening or, by carrying out the awareness campaigns. These are the issues before us. So my point is, we need to work hard where we are lacking in establishing a good communication, good coordination, and how can we have a good network through single window system. Anyone, see, there are so many websites, CWC websites, IMD websites, Government of Maharashtra websites, Agriculture Department websites. I feel there should be only a dedicated website for disaster management for the whole country as such, for citizens' benefit. We need to work on it. How can we create a single window to interact, to raise the grievances, to seek the grievances from the public, and to address them in the future also in a convenient way that may, considering people or citizen as a center point or a kingpin for all such a kind of, governance in the disaster. I won't take much time of yours. I'm very glad to see a wonderful arrangement, Madam, Roundtable. Particularly, this is a very comfort because we come as a strangers, particularly in such a roundtable, but we go as a friends here. Yeah, this is a scenario due to happens because of this roundtable like scenes. Otherwise, we sit like a student. Teacher comes here, gives a lecture, and we departs. So good, nice arrangement. This is a kind of breaking the ice between those who are strangers or having some kind of phobias or complex. So feel free. My number is always available with all my members. I'm ready to interact with anyone else. And I always welcome suggestions or any kind of inputs or experiences in future. Thank you very much. Thanks. Thank you so much, sir. Yes, so thoda ikde. So now I will request Karen ma'am to please take it on. एक्चुअली सर और मैंने बात तो नहीं किया, लेकिन सर ने इतनी अच्छी तरह से एंडिंग किया कि मेरा स्टार्ट इज परफेक्ट फ्रॉम देयर. उन्होंने ऐसा कहा कि एक तो इट इज ग्रेट वी हैव अ राउंड टेबल. 2, उन्होंने कहा कि वी हैव कम एज स्ट्रेंजर्स एंड वी आर गोइंग टू गो एज फ्रेंड्स. तो अभी आपको कोई चांस ही नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं, राइट? यू हैव टू बी फ्रेंड्स, राइट? एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ही सेड इज प्लीज फील फ्री टू टॉक. Right? We don't know each other. And when do strangers get to know each other the best?
आप कभी ट्रेन पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या होता है, आप किसी के पास जाके मदद मांगते हैं, राइट? इट इज इन टाइम ऑफ नीड, इट इज इन टाइम ऑफ डाउट, इट इज इन टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी गेट टू नो ईच अदर बेस्ट. और हमारे ये जो राइज वर्ल्ड समिट है, हम इसमें जब राउंड टेबल्स करते हैं तो एक्चुअली हमारा कोई भी पैनल्स और प्रेजेंटेशंस नहीं होते. और दुनिया में आज तक मैंने ये पूछा हुआ है, एंड वी हैव पीपल फ्रॉम 5,000 people from 60 plus countries. I think we have crossed 70 also maybe now attending this. और आज तक किसी ने मुझे कहा नहीं है कि हमारे यहाँ भी ऐसे होता है. So obviously very unique. और हमारे राउंड टेबल्स में हम जो करते हैं is 3 C's. Starting with the first C that Sir spoke of. Challenges. Because that's the best way to break the ice. Exactly the right word. अगर मैं आपको बोलूं आके बात करो कि आप क्या क्या करते हो, तो आधा घंटा क्या, दिन भर हम बात कर सकते हैं, है ना? And you think everybody else will spend time listening to you? But if you're talking about your problems, कि मेरा ऐसा problem है, तो तुरंत, I think because that's humanity, right? तुरंत people will be listening to you, right? It is human nature. And that is why we start with challenges. लेकिन सिर्फ challenges सुन के भी तो problems फायदा नहीं है ना. If we don't find solution, वो तो फिर कृप हो जाता है. Challenge नहीं है, वो कृप हो जाता है कि बोलते रहना ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये. So the next part of our round tables are talking about capabilities. How do we find solutions to these challenges, right? But वो भी बंद नहीं होता है, because हमारे पास solutions होते हैं, but how do you scale those solutions? How do you take them long term? How do you make them sustainable? कहते हैं ना, साथ में जाना है तो मिल के जाना पड़ेगा, दूर जाना है तो शायद अकेले जा सकते, है ना? लेकिन पहले तो हम साथ में चले, तब जाके हम दूर जा सकते हैं, है कि नहीं? So therefore we talk about collaboration, the third part. तो आज very quickly, because we do have less time, we will do the same format जो हम अपने राउंड टेबल्स में करते हैं ऑनलाइन. अभी भी चल रहा है वैसे राउंड टेबल्स. We will do the exact same thing here, which is why I said एक होता तो बहुत अच्छा होता है, but that's fine. We can, and I wanted a mix of the DDMOs and the members on each table. लेकिन that's also fine. Challenges are many. Solutions will also be found, है ना? So we'll find the solutions here. So what we're going to do very quickly over here is कि, और यहाँ पे Q&A नहीं है कि मैं ये बोलूं आप बताइए, आप बताइए, नहीं. Please feel free to come in. Please feel free to share. And I'll say the same for those who are online. Please raise your hands so that we can track, who's raised their hands, and we'll try and bring you all in as much as we can into the solutions, right? Into the discussion. Because ultimately, challenges बहुत है, but we will find ways, right? We have to find solutions, right? We have to be innovative, right? So we'll do that. Yeah. So please feel free to jump in. Those who are online as well, you are as much part of this round table as everybody sitting over here. Okay. All right. So great. So as I said, challenges से शुरुआत करते हैं. सरबजीत सर ने भी बात किया challenges के बारे में. Director सर ने भी बात किया challenges. Thank you. I was going to freeze. Yeah. So we've definitely already started some thought process. और शायद आपने भी वो सुन के कुछ सोचा होगा. So please, can we have anybody start talking? What would be the first challenge, or not first, but one of the challenges that perhaps you want to start talking about? Anybody, please. This is open house. In any language. Yes. Thank you, Yusuf. Absolutely. Absolutely. In any language. Yeah. Yeah. So one here and then one time. Okay. राहू दे तसंच राहू दे. ऑनलाईन जॉईन झालेली आहे त्यांच्यासाठी एक इथनं सूचना आहे की आता आपण काय करतो आहोत की आपण तुम्हाला तुमच्या फील्डमध्ये तुमच्या मध्ये येणारे जे चॅलेंजेस आहेत ते डिस्कस करतो आहोत. सो तुम्ही रेज हँड करून आपलंही इथे या ठिकाणी मत व्यक्त करू शकता आणि डिस्कशन मध्ये सहभागी होऊ शकता. चॅट बॉक्सचा पण वापर करू शकता. आणि वेळेची मर्यादा असल्या कारणाने जरा 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपण आवरूया. थँक्यू.
नमस्कार। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब ये मीटिंग किया था तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग हमारे एरिया के एक्सीडेंटल प्रोन कौन से जगह है। अच्छा, मेरा नाम है योगेश करनी, कॉमन पीपल सोशल फाउंडेशन फ्रॉम विरार। तो लास्ट टाइम के राउंड टेबल अपने मीटिंग में बताया गया था कि किस तरह से आपको लोकेट करना है। तो बेसिकली हमने न्यूज चैनल्स, यूट्यूब एंड गूगल से टारगेट किया कि क्या क्या है, लेकिन एक चैलेंज आ रहा है कि रियल डेटा हमें कहाँ से मिल सकता है, जैसे कि DDMO उसके ऑफिस से मिल सकता है एंड देन लोकल अथॉरिटी से मिलता है। तो वो एक मेरा चैलेंज था। दैट्स इट, थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड जैसे आपने कहा कि हमारे जो जनरल बॉडी मीटिंग था महापीकोनेट का, उसमें हमने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट लिटिल मोर. या एनीबडी एल्स? देयर वाज समवन ऑनलाइन, राइट, हु हैड पुट अप देयर हैंड. Yeah. Hi, this is Kamlesh here. Is my voice audible? Very audible. Hello. Yes, go ahead, Kamlesh. हाँ मैम, एक्चुअली एक ऐसा एक व्यू पॉइंट था कि जैसे आज हम काम कर रहे हैं तो मोर ओवर यूथ में ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है. तो विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने लास्ट टाइम हमारे ट्राइबल स्कूल्स में हम लोग जब ये बात कर रहे थे कि आपके यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिजास्टर हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हो करके. सो दे वर वेरी, मतलब साइलेंट हो गए कि क्या करना चाहिए, नहीं भाग जाना चाहिए, ऐसा वैसा सब था. So, Kamlesh, I think Kamlesh, I'm just going to come in very quickly. Your voice is it's not very clear. Can you type your statement in the chat box? We will read it out. Yeah. या चल गया. तो अभी आ रहा है क्या आवाज? Sorry. Still is it a network issue? And reduce the volume. I think the volume is too high. The volume is too high. Yeah. Okay. Anybody else over here? Yes, please. Good afternoon, all. Myself, Dr. Prasad Sankpal. I am working as a district disaster management officer at Kolhapur. Fortunately, I am the part of this disaster management from past 17 years. And during these 17 years, I feel fortunate that I somehow could manage many man-made and natural disasters, floods, road accidents, LPG gas tanker accidents, industrial hazard, wild animals attacks and all. So the biggest challenge which I feel I want to share here with you all, on the board, on the dais, we are saying so many players are there. And here we are all the policy makers and policy implementers. Both of we are working on the different points of the society. We are working, but I think that there is a big gap between these two mechanisms. Before some time, Sarabji sir was saying that there is a need of social governance. Social governance is happening there. Good government governance is also happening there, but there is the need of a bridging the gap between these two institutions. So I am finding the biggest challenge in that. So with this network, somehow, if you are going to bridge the gap, that will be the great thing. Thank you. Thank you very much. Very, very valid point. Okay, great. Anybody else? Will we have whether online or out? Please. गैप तब ब्रिज होगा जब हम बात करेंगे. बात नहीं करेंगे तो ब्रिज कुछ नहीं होगा. प्लीज. कि क्या हम लोकल लैंग्वेजेस में या मराठी हिंदी में कर सकते हैं तो ग्रास रूट जो वॉलंटियरी है, जो काफी कनेक्टेड है, वो भी समझ पाएंगे. क्योंकि काफी सारे पॉइंट इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहे हैं या काफी सारे लोग हैं जो समझ में नहीं पा रहे हैं. तो वहां से हम लोग अभी से शुरुआत करते हैं. एक सेकेंड मेरा ये चैलेंज था कि जैसे पहले सिविल डिफेंस करके एक एक्टिवेशन था जो ग्राउंड लेवल पे लोकल यूथ के साथ कनेक्ट होके मंडल्स हो या छोटे छोटे स्कूल के ग्रुप्स हो, कॉलेजेस के ग्रुप्स हो, उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन होके काम होता था. वो वैसे क्यों आजकल एक्टिवेट नहीं है?
क्या वो हम फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे पास काफी सारे गणेश उत्सव मंडल है या फिर नवरात्रि उत्सव मंडल है, छोटे छोटे नुक्कड़ पे काफी सारे मंडल है जिसपे बड़े मात्रा में यूथ कनेक्टेड है. कैन वी कनेक्ट देम उनके लेवल पे जाके, नॉट विथ आवर लेवल? थैंक यू. तो मैं सर, माय नेम इज निरंजन, मैं अलर्ट सिटीजन फोरम संस्था से हूँ. थैंक यू. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हमने अभी सब चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस या कुछ बोलना है उसके लिए, आप प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते नहीं है, एंड दोज हु आर ऑनलाइन प्लीज पुट इन द चैट. वी डोंट वांट टू मिस एनीबॉडीज इनपुट ओवर हियर. तो जितना भी थॉट्स आ रहा है सबका, तो प्लीज आप या तो चैट में या तो लिख के लीजिए, ताकि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको भी हम आगे ले आ सकते हैं. या great. Anybody else? Somebody's Omkar. Yes, Omkar sir. Hello, good afternoon. Nice to see all of you there. Am I audible? Clear? Hello, Namaskar Dhuraj sir. So one thing which I always, when I was there, one thing which was missing is link between. Bola. Sorry? Request is Marathi मध्ये बोला. अच्छा, मराठीत बोला. मराठीत प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याकडे जे जिओ एनजीओ कोऑर्डिनेशन नेटवर्क आहे ते अजून स्ट्रॉंग झालेलं नाहीये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर. जिल्ह्यात काही जिल्ह्यात आहे, जसं मला माहिती रत्नागिरीत आहे, रायगडमध्ये आहे, कोल्हापुरात आहे, पुण्यात थोडंफार आहे, पण हे फॉर्मलाइज नाही झालेले, गव्हर्नमेंट स्तरावरती फॉर्मलाइज नाही झालंय. ते फॉर्मलाइज जर हा झाला आणि महापिकोनेटला आणि जिओ एनजीओ कोऑर्डिनेशन नेटवर्कला कनेक्ट केलं तर आपल्याला खूप फायदा होईल. आता असं आहे की एनजीओज काम करतात, पण एनजीओज सायलोज मध्ये आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये छोटं छोटं काम करून तिकडे हे होतं. महापिकोनेटशी जे एनजीओज जोडलेले आहेत त्यांना वेबसाईट वरती रेकॉग्निशन मिळतं. आमचे निरंजन जी आहेत आता ते बोलले, म्हणजे दे स्टार्टेड ॲज अ, सुरू झालं तेव्हा एकदम छोटी एनजीओ होती, आज खूप मोठी एनजीओ झाली. ते काम करत असतात पण ते सायलोज मध्ये करतात. तर वी शुड लिंक दिस गॅप विथ म्हणजे स्टेट लेवल प्लॅटफॉर्म आणि डिस्ट्रिक्ट, म्हणजे गडचिरोलीतल्या पार शेवटच्या गावातली एनजीओ पण आपल्या ह्या प्लॅटफॉर्म ह्या रूम मध्ये असेल तेव्हा एक ब्रिज, ते गॅप ब्रिज होईल. तर दॅट इज माय सजेशन. थँक्यू. थैंक्स ओमकार. बट आई वांट टू से, और आपके टेबल पे एक महापिकोनेट का ब्रोशर भी रखा हुआ है. अगर आप देखेंगे तो आज के तारीख में वी हैव गॉट ओवर 140 मेंबर्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु आर एसोसिएटेड विद अस, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में each and every district of Maharashtra has been covered. That was our first objective and target. Abhi we will go to the block level. With your help, we will. Hands up. Rajesh, आप बात करना चाहोगे? नमस्कार, मी सचिन मी सांगलीहून आलोय प्रेरणा फाउंडेशन या संस्थेकडून. आमचे सकपाळ सर पण आहेत, कोल्हापूरचे मित्र आहेत, त्याचबरोबर आमचे नदाब सर पण आहेत आता ऑनलाईन. तर ही जी मीटिंग आता आपली चर्चा चालू आहे त्या अनुषंगानं ब्लॉक लेवलला एक मेकॅनिझम नाहीये, तो एक लॅकोनच आहे. आणि एव्हरी विलेज टू मस्ट फॉर्म द विलेज डिझास्टर कमिटी and they should be every म्हणजे 3 महिन्यानंतर त्यांची एक मॉक ड्रिल व्हायला लागेल विलेज लेवलला. आता आमच्या 4 ब्लॉक आहेत, वळवा, शिराळा, पलोस आणि मिरज, 62 विलेजेस आहेत. परंतु आता ठीक आहे, काही लॅकोनस आहेत, म्हणजे सगळ्या ठिकाणी आहेत, परंतु ते कसं कमी करता येईल आणि आपल्याला दर 3 महिन्यांनी कसं बसता येईल एक आढावा. आपण आता दुसरी मीटिंग असेल आपली महापिकोनेटची, तर तसं ब्लॉक लेवलला आणि जिल्हा लेवलला पण जिओ एनजीओ कोऑर्डिनेशन व्हायला हवं, विलेज, ब्लॉक आणि ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट. थँक्यू. हॅलो.
Hello. Please go ahead, Rajendra ji. Yes. सर्वांना नमस्कार. आज आजच्या कॉन्फरन्स मीटिंग मध्ये आमच्या रायगडचे DDMO सुद्धा उपस्थित आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं, ग्राउंड भागामध्ये काम करत असताना राजेंद्र जी, आप अगर वीडियो ऑफ करके बात करेंगे तो शायद बैंडविड्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. या प्लीज गो अहेड. ग्रामीण भागामध्ये काम करत असताना शासकीय सूचना पोहोचून सुद्धा लोक स्थलांतरित होत नाहीत, ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे. अजून सध्या आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही ग्रासरूट पर्यंत आपले व्हॉलेंटियर पोहोचलेले आहेत पूर्णपणे, पण आपण कुठेतरी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कमी पडतोय. तिथपर्यंत आपल्याला पोहोचणं गरजेचं आहे. आणि नुसतं एकदाच प्रशिक्षण घेऊन उपयोग नाही, तर आपल्याला वारंवार त्या लोकांकडे आपल्याला त्यांची मानसिकता चेंज करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. It's very good point. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. One more hand up. Or anybody from, yes, Nalini, please. Hello. Hello. Yes. Good afternoon, everyone. My name is Nalini Yadav. Just excuse me. So since our representatives from government and NGOs not working. Okay, sorry, I'll speak Hindi. मेरी मराठी kindly excuse, तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ. क्योंकि हमारे NGOs and government दोनों के representatives यहाँ पर हैं, so I think हमारा जो GO NGO coordination का pilot project रत्नागिरी में है, उसके बारे में एक introduction देना चाहूंगी मैं. और एक आई नो कैरन, आपकी पॉलिसी है कि आप PPT नहीं रखते हो, पर इट इज नीडेड कि हम सिंस ऑल मेंबर्स आर हियर तो एक इंट्रोडक्शन रख सकते हैं. यस, एंड सिंस वी आर स्पीकिंग, एक कोऑर्डिनेशन की जो NGOs के साइड से और गवर्नमेंट के साइड से, एक दोनों के साइड से रहता है कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है. जैसा सर ने भी बोला कि गोल्डन आवर रहता है वो, और उस टाइम पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस आते हैं. सो आई विल स्पीक ऑन इट लेटर ऑन उसके बारे में, एंड गो अहेड विद द सेशन नाउ. थैंक यू. Yeah, Shahina, would you like to go ahead, please? Introduce yourself and go. Yeah, unmute her, please. Yes, hello. मैम मेरी आवाज आ रही है? Hello. We can hear you. Yes, ma'am. Hello. Please go ahead. We can hear you. Okay, okay. मैम मेरा नाम शाहिना शेख है, मैं नागपुर से बात कर रही हूँ, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से, उसका नाम है इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी. मैम हम लोगों ने नागपुर में यूथ को अर्बन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ जोड़ने के लिए काफी प्रोग्राम्स किए उनके साथ. देन अभी SDRF ने एक आपदा मित्र करके यूथ को ट्रेनिंग दी है. इस ट्रेनिंग के बाद मेरा ये सोचना है कि यूथ बहुत मुश्किल से UDRR के इस मुद्दे से, जब इश्यू से जुड़ा है, तो इस ट्रेनिंग के बाद वो कंटिन्यूएशन में उसे आगे बढ़ाए, जैसे कि मॉक ड्रिल्स हो. क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग सिर्फ इसीलिए यूज होंगी कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया और जब कभी किसी तरह का डिजास्टर हो तभी यूथ उसमें इन्वॉल्व हो, तब ऐसे में यूथ का इंटरेस्ट चला जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूथ को जब हम UDRR से जोड़ते हैं, देन उसके बाद उस इंटरेस्ट को बनाए रखना, तो वो एक्टिविटीज होनी चाहिए. थैंक यू. Thank you. That was an excellent point. I think there is a need for engagement. जो आपने कहा वो सही है. 3 साल कैसे निकाले हैं, because वो engagement continues रहा. अगर हम सिर्फ disaster के time पे बात करेंगे तो obviously it's a problem. Thank you for that excellent point. Great. Anybody here from here, please? No? Okay. Anybody else? Yes, Lloyd. Please unmute yourself and go ahead. Thank you.
Yeah. In order to tackle disasters, we really need to work during so-called peacetime. When there is no disaster on the scene, what can we do? And preparedness is all about that. Anticipatory action. तो हमें ये करना है कि इस तरह का DDMO, DDMA के साथ क्या काम करना है और कैसे काम करना है प्रिपेयर्डनेस फेज में, जब आपदा नहीं है। तो ये आपदा मित्र के थ्रू क्या रिस्पांस के बारे में ही नहीं बात करना है, लेकिन कैसे एंगेज करें। So anyway, voluntary action may be a key. Forming committees at the block and sub-district level and at the city ward level may be essential. तो there are काफी चीज कर सकते हैं, लेकिन हमें चुनना होगा और एक्शन कमिट करना होगा जो हमारे प्लान है। तो I know many of the DDMOs who are around, and I am pleased to meet virtually our new director who has been there for several months. I am very glad to hear him say that within the next 3 years, zero disasters hoga. So that's an ambitious target, but let us take action. And I will meet some of you in person next week in Mumbai. But if my meeting is not important. The action that we take district by district and at the sub-district level is crucial. Thank you very much. Yeah, thank you. That's enough. Really appreciate your commitment to always being in our sessions. He's joining us all the way from Egypt while he's there. And yes, we look forward to talking to you and, getting some of your inputs. I think that's a good way to move to the next part. जैसे मैंने कहा कि हम challenges के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें solutions भी चाहिए, innovations भी चाहिए. तो अगर if we can have, okay, we have 2 people who have put up their hands. All right, we will first hear from them. In the meantime, मैं आप सबको request करूंगी कि आप please थोड़ा सा अभी solutions, innovations हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी सोच के we will start talking about that. Yeah. So Sujata, you would like to talk? Please go ahead. आप unmute करके start कर. Yeah, greetings from Ecologic Foundation to everybody. And after working for 15 years in disaster management and as an architect, also I would like to bring up one issue that is and I also would like to take what Rego said a little ahead, that our act seems to be very reactive act, like disaster management act. So there is much need for us to look into our planning level also, like how we integrate this into our planning. That is where that gap is also there, huge gap, because our development plans come up as a top-down approach, and disaster management come up as a bottom-up approach. So somewhere, we have to put in, we have to say, and we have to do and not do certain things. So that thing we have to bring in here, and let us see that how this has been integrated into our disaster management. This disaster management planning is integrated into our development plans, basically. So that so many problems what people have shared here, so many challenges, suddenly we will realize that many challenges we have resolved. Great. This was my... Absolutely. Makes a lot of sense. Thank you. Thank you so much. Okay. 2 more. Yeah. 1 more and then, yeah. I want to also say one more thing to everybody. This format, the 3C format, जो हम ये use करते हैं Rise World Summit के लिए, ये हम हमारे हर एक इनफैक्ट राउंड टेबल्स या एंगेजमेंट में करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कितना इफेक्टिव होता है रादर देन पैनल्स एंड प्रेजेंटेशंस. तो मैं आपको एनकरेज करूंगी, इस पे कोई आईपी नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है, आप प्लीज यूज कीजिएगा. या प्लीज रेप्लिकेट दिस मॉडल एंड यूज इट फॉर इट्स इफेक्टिवनेस एंड आउटकम्स जो आप चाहते हैं जब आप मिलके बात करते हैं, ताकि सही में हम जाके कुछ कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट आके हाँ हमने मतलब बात किया, presentation किया, and then it's over, right? So use it. We are more than happy for people to use it. Yeah. हमें याद कीजिएगा दो, right? No IP, but याद करना. All right, great. We have, yeah, please, Mike. Otherwise, you can get started.
Hello, my name is Yugandhara and I am from the Resilient Foundation, Palghar. मेरा जस्ट एक ऐसे था कि जब हम डिजास्टर की बात करते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट हमें करना है, तो ये कम्युनिटी लेवल पे हमें जब कम्युनिटी लेवल पे ये जब जाएगा तो इफेक्टिवली उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। तो जस्ट मेरा एक ऐसे सजेशन था कि अगर हम ये प्रोग्राम्स या फिर ये डोमेन कम्युनिटी को फ्रेंडली कैसे लगे, कि कम्युनिटी जैसे बहुत बार हमने देखा है कि कम्युनिटी को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये करना चाहिए, बट अगर कम्युनिटी के भी इनपुट्स हम ले और ऐसे तरह के प्रोग्राम अगर हम लेके आ पाए तो शायद कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है और इफेक्टिवली डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम हो सकता है। थैंक यू। Thank you very much. Yes. हॅलो. हॅलो, माझं नाव डॉक्टर नरेंद्र. मी पब्लिक हेल्थ कन्सल्टंट म्हणून काम करतोय. तर माझं एक म्हणणं आहे की ग्राउंड लेवलवरती आपण जेव्हा बघतो तर डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये असं होतं की मेडिकल ऑफिसर्स त्यांच्या पर्सनल लेवलवरती काम करतात, म्हणजे त्यांना तेवढं ट्रेनिंग नाही दिलेलं आहे. डिझास्टरमध्ये एक्झॅक्टली त्यांचा रोल आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय राहतील, तर त्या बाबतीत थोडंसं कोऑर्डिनेशन मला वाटते नाही आहे. आणि आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर जो आयुष्यमान भारत प्रोग्राम जो आलेला आहे त्याच्या अंतर्गत आपल्याला प्रत्येक गाव लेवलवरती कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स रेडी झालेले आहेत. सो दे कॅन बी अ पॉइंट पर्सन की जेथे डिझास्टर प्रोन एरियाज आहेत आणि त्याच्याच जोडीला जी विलेज हेल्थ अँड सॅनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी असते त्या कमिटीची मीटिंग होणं खूप गरजेचं आहे. तर जे आता आपलं म्हटलं की गाव पातळीवरती आपल्याला ती मीटिंग व्हायला पाहिजे, या 2 मीटिंग जर क्लब केल्या तर मला असं वाटतं की वी कॅन क्रिएट अ मोर इम्पॅक्ट ऑन कम्युनिटीज. ते असं मला वाटतं. Thank you very much. As we can see, we are really getting great suggestions, great points that have been there, and this is exactly what we want. कि हम सब मतलब साथ में सोचे, साथ में देखें कि हम आगे क्या कर सकते हैं. हमें लगता है मुझे टाइमिंग एक्सटेंड करना पड़ेगा. इतने टाइम में नहीं होने वाला, but we will do the best we can because we definitely want to do. Karen, Yes, sir, Abhijit, please come in. the point which was made by gentleman just now about the 2 officers of Ayushman Bharat related trained and etc. at the village level. I think many departments are putting up their human resources at sub block level and at panchayat level and at various other levels. I think we need to. I think this is an excellent opportunity to leverage their capacity. So if we can map out which are the departments and what all is there, then we can start sort of working with them, no? I'm going to take that as another challenge. You're absolutely right. We need to do a lot of mapping. And, you know, only when we do mapping of at various levels, and we spoke about data also earlier, I think these are the points. And, you know, this doesn't require too much money, okay, or too much resources, because there is inherent knowledge and there is a lot of inherent this thing. So it can start small and then we can bring in the resources we need to make it much bigger. And of course, we need the support of government to help us get those resources, to be able to utilize them effectively. But we can make a beginning, because once we demonstrate that we are capable of giving this and sharing this knowledge and information, then perhaps it will become a lot more easier for us to get government to also believe in us and work with us, and of course provide us the resources we need to maybe scale it up, you know, this thing. So I hope that made sense as well. Yes, Rajdeep, as I said, keep the momentum going with any points, and then after that we will come back. Yeah. Yes, Rajdeep sir, आप unmute करके बात कर सकते हैं. Yes, Karen. जैसे कि सरबजीत सर ने अभी बताया है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम पे काम करता है, तो वो भी हम क्लब कर सकते हैं या फिर उसका भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमारा मिटिगेशंस में या फिर जो भी हमारे रिस्पॉन्स में उसका हेल्प हो सकता है. हम जैसे सरबजीत सर ने अभी बोला है कि उसे हम किस तरह से मैप कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए चैलेंज है. और ये एज अ DDMO ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए. Thank you very much for sharing that. Yes. नमस्कार, माझं नाव संकेत घाणेकर. मी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालयातून सरांसोबत काम करतो. सरांनी मग एक वाक्य सांगितलं, सगळ्यांना परिचय की मराठीत बोलतो जास्त, कारण की एक वाक्य असं होतं की
शांततेच्या काळात घाम गाळला तर युद्धाच्या काळात रक्त सांडायला लागत नाही. हे खरं तर आपत्ती व्यवस्थापन नाही म्हणून पसरून घेण्याचं वाक्य आहे, कारण जे प्रिपेअरनेस वरती भर दिलात तरच तुमच्या आपत्तीची सौम्यता तीव्रता कमी करता येईल. आणि आपण हॅलो कम्युनिटी मध्ये आपण ग्राउंड लेवलला जे लोक काम करतात गाव पातळीवरती आपण विविध आहोत. आपल्याला एका साईडला अतिशय ऊन पडतं, एका साईडला अतिशय पूर आहे, एका साईडला अतिशय थंडी आहे. तर त्या आदिवासी भाग सुद्धा आपल्यामध्ये आहे. त्या लोकांना त्यांच्या भाषेत त्यांना समजेल असं आपत्तीच्या संकल्पना समजून सांगून त्यांच्या अंगणात ते करून घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. कारण का काही लोकांना आपली मराठी भाषा शुद्ध समजत नाही. काही लोकांना अगदी आपण नागपूर विदर्भात थोडा हिंदी मिश्रित भाषा समजते. त्यांना त्यांच्या भाषेत जोपर्यंत आपण आपत्ती समजून सांगत नाही तोपर्यंत तिथे डेव्हलपमेंट किंवा तिथे बदल आपल्याला दिसत नाही. आणि शेवटी सांगेन की थोडीफार की जरी एक अश्रू पुसायास आला तरी जन्म काहीच कामास आला. म्हणजे आपल्याला एक जरी जीव वाचवता आला तरी आपला जन्म सार्थकला असं वाटेल. धन्यवाद. थैंक यू. ओके, सो आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी ऐसे जैसे मैंने कहा दोनों हम सोल्यूशन और कोलैबोरेशन दोनों के बारे में बात करेंगे कि how do we do, and also Nalini, I guess maybe the collaboration part can be part of your session and you can take that forward, talking about collaborations, move over there since we are anyway going to talk about geo-NGO coordination. So maybe we'll use this next 15 minutes to talk about the solutions or some thoughts and ideas. Please, sir. Yeah. हॅलो. हा मी बनवटे बोलतोय, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पुणे. मला थोडक्यात सांगायचं असं आहे, आपत्ती व्यवस्थापन हा माझा एकट्याचा किंवा हा शासनाचा विषय नाही. आपत्ती व्यवस्थापन ह्या प्रत्येक व्यक्तीने प्रत्येकाच्या बाबतीत जर केलं तर आपण सगळ्यांना घेऊन जाऊ शकतो आणि सगळ्यांना वाचवू शकतो ह्या सगळ्या गोष्टींमधून. आपण शासन परिपूर्ण नाहीये. मी माळींचं पुनर्वसनामध्ये बघितलं अनेक 10 वर्षापासून ज्यावेळेस मी आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आहे. प्रत्येक गोष्ट आपण परिपूर्ण करू शकत नाही जोपर्यंत आपण समुदायाचा सहभाग घेत नाही त्याच्यामध्ये. आणि समुदायाचा सहभाग जोपर्यंत घ्यायला पाहिजे नसताना आपल्याला त्या ग्राउंड लेवल पर्यंत जाणं अपेक्षित आहे. गाव पातळीला तिथला जो सर्कल कोतवाल तिथला जो ग्राम पातळीवरचा जो सरकारी अधिकारी आहे त्याला आपण जोपर्यंत प्रशिक्षित करत नाही, तो प्रशिक्षित करून तो इतरांना ज्ञान देत नाही तोपर्यंत आपण हे शक्य नाही. गावामध्ये जोपर्यंत आपण, आता मी जिथं पुण्यामध्ये राहतो, घटना घडत असतात, वेल्ह्यामध्ये घटना घडत असतात, जुन्नरला कुठेतरी वेगवेगळ्या ठिकाणी घटना घडत असतात. अशा घटनांना जर प्रतिसाद द्यायचा असेल, तिथून कॉल आला तर मी प्रतिसाद नाही देऊ शकत 2-3 तास जोपर्यंत माझी यंत्रणा तिथं पोहोचत नाही. पण तिथं जर माझा प्रशिक्षित लोक असेल, प्रशिक्षित व्यक्ती असेल, त्यांनी जर किमान ती यंत्रणा व्यवस्थेवर जर आम्हाला प्रतिसाद दिला किंवा ती घटनेस येऊन आम्हाला माहिती दिली आणि माहिती देऊन आमच्यापर्यंत ती पोहोचली आणि आम्ही यंत्रणा पोहोचू शकलो. ह्या प्रत्येक गोष्टी आहे. आपण जिओ-एनजीओ मध्ये कोऑर्डिनेशनचा जेव्हा भाग करतो, पुण्यामध्ये पण बरेच वेळा बघितलं, ही काय झालं, पुण्यामधलं फार हाय लेवलला त्यांनी काम सुरू केलं, त्याच्यामुळे त्याला रिस्पॉन्स मिळाला नाही. आपण काय झालं, आपण खाली ग्राउंड पर्यंत गेलोच नाही. आपण म्हणजे वरती मिनिस्टरांच्या मीटिंग होतात त्याच लेवलला एकत्र येणं, तेव्हाच काहीतरी बोलणं, असं होत नाही. आपण ग्राउंड लेवलला जोपर्यंत येत नाही, त्या विषयाच्या गाभ्याला आपण हात घालत नाही तोपर्यंत ह्या गोष्टी पुढे येत नाही. दुसरी गोष्ट, जिल्हा स्तरावरती जर आपण सगळे 1 महिन्याला एक मीटिंग ठरवून घेतला, सगळे एनजीओ एकत्र जर आला, आम्हाला त्याच्यामध्ये बोलवलं तर आम्ही नक्कीच येऊ. प्रत्येक महिन्यामध्ये वेगवेगळे विषय ठेवू, वेगवेगळे विषय ठेवून आपण त्या कुठल्या विषयामध्ये पुढे घेऊन जायचं, कुठला विषय किती तीव्रता धोकादायक आहे किंवा ठरवायचं कसं आहे, हे जर आपणच ठेवलं आणि DDMO ला जर तुम्ही त्याच्यामध्ये सहकार्य करून घेतलं तर आम्ही नक्कीच त्याच्यामध्ये सहभाग घेऊ आणि एनजीओचा सहभाग आम्ही करून घेऊ त्याच्यात. मी थोडं बोलू शकतो. रत्नागिरी DDMO. प्लीज कम इन, प्लीज कम इन. सर नमस्कार आणि सर्वांना नमस्कार. खरं तर एक चांगली गोष्ट आहे की आपण सर्वांनी आम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सहभागी करून घेतलं. मला इथं फक्त 2 गोष्टी थोड्याशा मांडू इच्छितो की साधारणपणे कोकणामध्ये आज आमचे रायगड DDMO आहेत किंवा राजेंद्रजींनी मगाशी सांगितलं की कोकणामध्ये खूप मोठी समस्या आहे दर्डींची. तर ह्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला लोक स्थलांतर होत नाही आणि कोकणातला जर बहुतांश भाग बघितला तर हे सगळे जे डोंगर आहेत ते खाजगी मालकीचे आहेत. तर मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये कुठेतरी पॉलिसी लेवलला एखादा डिसिजन असं होणं गरजेचं आहे की कंपल्सरी डोंगर उतारावरती नवीन बांधकाम किंवा नवीन डेव्हलपमेंटला परमिशनच न देणं, हा एक मुद्दा. आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये कोकणामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती हानी झालेली आहे. तर जेणेकरून आपण तुमच्या सर्व एनजीओच्या मदतीनं लोकांमध्ये आपल्याला इन्शुरन्सचं कल्चर कुठेतरी डेव्हलप करावं लागेल की जेणेकरून ह्या सगळ्या गोष्टी जर भविष्यात झाल्या
तर किमान शासनाच्या ज्या काही मदतीवर अवलंबून न राहता लोकांना काहीतरी चांगली ठोस एक मदत त्यांच्या हाती पडेल. धन्यवाद. Can I come in? Yes, go ahead, Sarabjit, please. So because we're talking solutions, on the sidelines of this meeting, I exchanged a message with IGSS Nagpur. I think Shaina spoke earlier, no? In response to that, that youth they're not able to keep the youth engaged continuously into a process, and that's their challenge. And I think we looked at this particular challenge, and we did make a small effort in Pune, and we did develop a system. And I think I'm proposing that we have a follow-up meeting to present that kind of a mechanism, which is available for replication. And maybe after the Rise World Summit, you can organize one event, one day, 1.5 hours, and then we can discuss. Definitely. Thank you very much, Sarabjit. I think that also requires a round of applause. Currently, we are getting support from UNICEF to, take this forward and do a lot more. I also want to share one more thing that UNICEF is supported, which we are implementing and which was announced at the general body meeting. जब हमारा GB meeting हुआ था महापिकोनेट का नवंबर में, तो हमने वहाँ पे लॉन्च नहीं with demonstrate किया था. हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं कम्युनिटी के लिए, जिसमें capacity building sessions can happen on their own. तो मतलब and regular events can be held, regular interactions, engagement, etc. can be done. तो ये कोई भी use कर सकता है. It is going to be an open platform because obviously for public good is what UNICEF always believes in. And so we are going to work on those as well. So hopefully there'll be a lot of new things that we will work with. And yes, Sarabjit, always ready, as I said, with the vision that UNICEF provides between Sarabjit and Yusuf sir as well, who's sitting here and looks after Maharashtra. Sarabjit heads from Delhi nationally, and Yusuf does for Maharashtra. So I think with both their support and guidance and help, and of course Nalini is here, all of you all know her more, I think, than any of us because you all are more interacting with her. But we will definitely come up with solutions that will help. Yes, ma'am, please. हमारे महापिकोनेट के टीम मेंबर्स तो एकदम मतलब they know everybody. नमस्कार सर. नमस्कार मॅडम. एनजीओ मी पण डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये गेली 10 वर्ष काम करते. तर हे काम करताना एक लक्षात आलं की ग्रामीण भागापर्यंत प्रिपेअर्डनेसचं कल्चर अधिकाधिक प्रमाणात गेलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला एनजीओचं नेटवर्क ग्रामीण भागापर्यंत कसं डेव्हलप करता येईल ते बघितलं पाहिजे. एक आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला आणि आम्ही तिथं काम करत असताना जर लक्षात घेतलं तर एनजीओ एखादी गोष्ट खूप चांगल्या प्रकारे करू शकतात. तर असं काही महापिकोनेटच्या माध्यमातून आपल्याला करता येईल का की काही गावं काही एनजीओना दत्तक देऊन तिथे त्या प्रकारचे ट्रेनिंग कोर्सेस आपल्याला घेता येतील का, हे एक बघावं लागेल. दुसरं म्हणजे ह्या सगळ्या डिझास्टर प्रिपेअर्डनेसच्या कल्चरमध्ये लोकांना इन्व्हॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने आपले जे काही बचत गट वगैरे आहेत की ज्यांना विविध प्रकारे एनजीओज देखील ट्रेनिंग देत असतात, त्या ट्रेनिंगच्या पार्टमध्ये देखील आपल्याला डिझास्टर मॅनेजमेंट इन्क्लूड करणं गरजेचं आहे असं वाटतं मला. आणि त्या अनुषंगाने देखील जर या महापिकोनेटचा जर आपल्याला नेटवर्कचा वापर करता आला तर अधिक चांगलं होऊ शकेल. आणि प्रत्येक एनजीओचे जे काही एक्सपर्टीज आहेत, उदाहरणार्थ आता आपण काही एनजीओ रेस्क्यूचं ट्रेनिंग देतात, काही एनजीओ अर्ली वॉर्निंगच्या बद्दल माहिती देतील. तर हे असं प्रत्येकाचं जे काही स्पेशालिटी आहे ती एकत्र करून आपल्याला ट्रेनिंग अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे असं वाटतं. आणि प्रत्येक जिल्हा स्तरावरच्या एनजीओ ह्या महापिकोनेटमध्ये कशा रीतीने सहभागी होतील, कारण आता आमच्या पण जिल्ह्यातल्या एनजीओ आहेत बऱ्याच काम करणाऱ्या, पण त्या सगळ्याच काही महापिकोनेट खाली आलेल्या नाहीयेत. तर ते येण्यासाठी देखील जर आपण आम्हाला मार्गदर्शन केलं तर अधिक चांगलं होऊ शकेल असं वाटतं. थँक्यू मॅडम. आमच्या अपेक्षा हेच आहे की प्रत्येक ब्लॉक मध्ये माय मराठी इज नॉट ग्रेट बट प्लीज, पण प्रत्येक ब्लॉक मध्ये वी वॉन्ट एव्हरी मेंबर टू बी देअर फ्रॉम महापिकोनेट. सो थँक्यू व्हेरी मच अँड वी विल डेफिनेटली बी इन टच. येस सर. नमस्कार सर्वांना. मी कोकण DDMC मोहन भोरे.
तर मला एकच ह्याच्यामध्ये करायचं आहे मॅडम, की आता आपण आमच्या सरांनी डायरेक्टर साहेबांनी सांगितलं की बिग चॅलेंजेस मध्ये CBDRM कम्युनिटी बेस्ड डिझास्टर रिस्क मॅनेजमेंट. तर हे याच्यापूर्वी आम्ही युनिसेफ थ्रूच मी 2012 साली जेव्हा मी सांगलीला DDMO होतो, आता मी DDMC आहे. तर मला डिस्ट्रिक्ट लेवलला काम करत असताना आणि डिव्हिजन लेवलला काम करत असताना जो अनुभव आला त्याचा, तर युनिसेफ थ्रूच आम्ही एक असं काम केलं होतं HIV AIDS मध्ये मॅडम, की त्याच्यामध्ये रिस्क रिडक्शन करून कशा पद्धतीने आपण HIV, आता जर आपण विचार केला हा डिझास्टरचा भाग नाही, पण त्यावेळेस HIV AIDS आम्ही कशा पद्धतीने युनिसेफच्या मदतीने आणि नॅकोच्या मदतीने आम्ही त्याचं मृत्यू प्रमाण कमी केलं. तसंच डिझास्टरचं प्रमाण पण आपल्याला ह्याच्यामध्ये 0 कॅज्युलिटी जशी आहे तसे करू शकतो. तर मी ते काम करत असताना मला जो सक्सेस मिळाला त्याच्यामध्ये कम्युनिटी बेस्ड मध्ये आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका, तसं त्या ठिकाणी. आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही कसं केलं की NGO मध्ये कसं होतं मॅडम, की फेथ बेस्ड ऑर्गनायझेशन, जसं CBO म्हणतो आपण कम्युनिटी बेस्ड, तसं त्या धर्माचा पगडा असलेले लोक त्याच्यामध्ये असतात. तर त्या धर्मातल्या व्यक्तीनं त्या गोष्टी जर सांगितल्या तर लोकांना पक्क पडतं. त्यासाठी फेथ बेस्ड ऑर्गनायझेशन हे पण आपल्या एका NGO मध्ये ऍड केलं. आणि जर आपण हे केलं, कारण ज्यावेळेस आपत्ती घडते त्यावेळेस त्या आपत्तीचं प्रमाण, म्हणजे जसं आम्ही काय सांगितलं होतं अगोदर, की तो HIV तुमच्या घरापर्यंत येऊ नये म्हणून तुम्ही सांभाळा, तसंच ती आपत्ती तुमच्या घरापर्यंत येऊ नये म्हणून मला सांभाळायला पाहिजे. तर प्रत्येकाला हे समजलं तर म्हणजे कसं होईल, की म्हणजे फर्स्ट रिस्पॉन्डर ज्यावेळेस आपत्ती येते त्यावेळेस तो त्याच व्यक्तीला त्याला प्रतिसाद द्यावा लागतो. तर शासनाकडनं मदत येईल किंवा कुणाच तरी मला सोडवायला येईल, ह्याच्यापेक्षा ह्या सर्व लोकांना एकत्रित घेऊन CBDRM हा जर आपण मजबूत केलं तर बऱ्याचशा गोष्टीचं आपल्याला आपत्तीच्या सगळ्या गोष्टीचं प्रक्षेप आपल्याला मिळू शकेल. एवढंच मला सांगायचं. थँक्यू. व्हेरी नाईस सजेशन. आणि युनिसेफचं काम आहे, आय मीन दुसरं इनिशिएटिव्ह आहे महापिकोनेट मध्ये नाहीये, पण देर इज अ डिफरंट इनिशिएटिव्ह विच इज विथ फेथ बेस्ड ऑर्गनायझेशन्स. सो वी कॅन डिस्कस अँड सी हाऊ वी कॅन हेल्प and how we can do that kind of integration between the two work, or at least coordination, if not integration, the coordination कसं होणार ते आपण. Thank you so much for suggesting. नमस्कार. Yes. नमस्कार, मी सागर पाठक, DDMO रायगड. मला सांगायला असा आनंद होईल की रायगड जिल्हा असा पहिला असेल मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये की रायगड डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ही आम्ही रायगड जिल्ह्यामधल्या ज्या NGO ज्या आहेत, ज्या प्रत्यक्ष फील्डमध्ये काम करतात, जे रिस्पॉन्स देतात प्रत्येक इव्हेंटला, म्हणजे प्रत्येक इन्सिडेंटला, तो रोड ऍक्सिडेंट असेल, फायर असेल, इव्हन कंपनीचा केमिकल जरी फायर असेल किंवा एक्सप्लोजन जरी असेल त्या ठिकाणी, तर त्या ठिकाणचा त्यांनी पूर्णपणे क्विक रिस्पॉन्स त्या ठिकाणी आता आम्ही रायगड जिल्ह्यामध्ये होतोय. आणि हे सर्व आम्ही पूर्णपणे NGOच्या माध्यमातून केलेलं आहे. जवळपास 21 NGOचा नेटवर्क आम्ही रायगड डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्समध्ये आम्ही हे केलेलं आहे, कन्वर्ट केलेलं आहे. मला एवढं सांगायचं आहे की आपलं जे हे नेटवर्क आहे, NGOचं आपण जे काम सुरू करतोय, तो एक भरोसा पाहिजे. जसं आम्ही आता आमच्या रायगड जिल्ह्यामध्ये ज्या NGOज आता काम करतात की त्यांच्याकडे काय काय रिसोर्सेस आहेत, त्या रिसोर्सेसचा कुठे युटिलाइज गव्हर्नमेंटला उपयोग होऊ शकतो, की त्याच्याकडे काय रिसोर्सेस आहेत, त्यांच्याकडे काय कॅपॅसिटीज आहेत, मॅनपॉवर किती आहेत, त्यांचे व्हॉलंटियर्स किती आहेत, आणि त्याप्रमाणे आपण डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन आम्ही त्यांचा योग्य उपयोग करून घेतो. आणि त्याचा डिझास्टरमध्ये महाडसारखं जे 2021ला महापूर आला होता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही तिथे रिलीफ वर्क आणि रेस्क्यू वर्क NGOच्या माध्यमातून केलं. आणि पूर्णपणे CSRच्या माध्यमातून आम्ही डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड सुद्धा क्रिएट केलेला आहे. आणि ज्या काही गव्हर्नमेंटचे आमच्याकडे इक्विपमेंट्स आले होते, बोट्स असतील, लाईफ जॅकेट्स असतील, टॉर्च असतील, ते सर्व आम्ही NGOला तिथे देऊन त्यांची कॅपॅसिटी बिल्ड करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. जसं मागाशी सामंत मॅडमनी म्हटलं की आपले जे आता ह्या नेटवर्कमध्ये ज्या NGOज आहेत त्यांचे जर कॅपॅसिटीज काय, रिसोर्सेस काय समजलं प्रशासनाला किंवा DDMOजला त्या जिल्ह्यामधल्या, की आपल्या जिल्ह्यामध्ये ही NGO आहे, या NGOकडे या कॅपॅसिटीज आहेत, यांच्याकडे मॅनपॉवर आहे, यांच्याकडे इक्विपमेंट्स आहेत, यांच्याकडे एक्सपर्टीज आहेत, जे ट्रेनिंग किंवा अवेअरनेस कॅम्पेन्ससाठी आपल्याला वापरता येऊ शकते. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की ज्या कॅपॅसिटीज आहेत NGOच्या त्या डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या समोर आल्या पाहिजेत. आणि त्यामुळे डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे ते आपल्याला काही त्या ठिकाणी उपयोग मदत कॅपॅसिटी अजून वाढवण्यासाठी काय मदत करता येईल ते सोयीचं होईल. त्यामुळं NGO आणि GO मध्ये भरोसा असणं महत्वाचं आहे. कारण नेम अँड फेमसाठी सुद्धा बऱ्याचशा NGO, म्हणजे मी ब्लेम करत नाही, परंतु काही मोटिवेशन काय आहे त्याचं, जे आपल्या नेटवर्कमध्ये जे जोडलेल्या NGOज आहेत त्या योग्य पद्धतीने काम करतात का, काय फक्त फेम आणि पैशासाठी या आपल्याशी जोडलेल्या आहेत, हे सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. त्यामुळे भरोसा दोघांमध्ये असणारा पाहिजे, असणं गरजेचं आहे.
आणि आपल्या दोघांसोबत तिसरा पार्टनर आहे जो कम्युनिटी आहे. आपण दोघांवरती जर जिओ एनजीओचा जर विश्वास असेल एकमेकावरती, तर तिसरा व्यक्ती आपल्या दोघांवरती विश्वास ठेवणार आहे. त्यामुळं ह्या तिघांचं जे काही कोऑर्डिनेशन असणार आहे ते होणं गरजेचं आहे, ते चांगल्या पद्धतीनं करणं गरजेचं आहे. Thank you so much. Definitely. I know there are many comments over there. What I would suggest is, because in interest of time, we still have a lot to do. हम एक रिपोर्ट बनाएंगे इस पे for sure, और वो रिपोर्ट हम शेयर करेंगे, which will have all the suggestions, all the issues, whatever जो भी अभी हमने डिस्कस किया है वो सब हम लोग करेंगे. I think just to, in the interest of time, okay, let's start with the GC members talking. Okay, let them this thing, and after which Nalini will do the presentation. So I think let's do those two things first, and then based on time availability, we can maybe spend some more time. Otherwise, we will plan another event. अभी मैंने यूनिसेफ से पूछा नहीं है, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि April में let's try and plan an event, either towards April or something like that, where we can have a full day event, like how we did the GB meeting, वैसे हम DDMO and members को बुला के maybe we can do something like this. So let's think about it. We will discuss more and see what are the opportunities. I know UNICEF is committed to this, so we will find ways to do. And risk reduction, so Sarabjit sir is, very, very, very passionate about that and has taken that up as a really very serious issue to look at. So I'm confident that there will be a lot more opportunities. ये एक ही opportunity नहीं है, ये पहली बार हम कर रहे हैं, वो मैं जानती हूँ, और इसीलिए शायद we are also eager to share. But we will have more opportunities, and we should encourage even small. आप district level पे भी ऐसे कर लो, आप block level पे ऐसे करो, आप village level पे ऐसे करो. Use this format कि आप जितना लोगों से बात करोगे, we all know participatory methods, हम लोग ये सब बोलते हैं लेकिन करते नहीं है. I'll be very honest with you, right? So the more we encourage that participatory, methods, I think the better we will be able to take this forward, right? This is the absolute last, okay? और इसके बाद में we will continue with the program. Yeah, please. Hi everyone, this is Ganesh here. I'm here from Haq Darshak. So it's a for-profit organization which works with multiple partners. So few things which I figured out. Very short. Sorry. Very short. Yeah. So sorry. So awareness is still a very important aspect when it comes to. And what has not been covered till now. Yes. So what I'm coming to is basically what Haq Darshak does is that it actually provides government. It makes sure that citizens avail government welfare schemes. Okay, so how we do that is with our agents. We have Haq Darshaks, we call them Haq Darshak, which are on ground. They reach out to each and every citizen in person, and they make sure that they understand what government schemes are all about, and then also help them with the application process of it. So, and also these Haq Darshaks are from the community itself. So one of the very important aspect which everyone mentioned, यहाँ पे सबने बोला कि community engagement जो है वो community के साथ में हो, तो उसके अंदर जो हक दर्शक होते हैं वो उसी कम्युनिटी से होते हैं. सो एग्जैक्टली वहां जहां हम वहां पे काम आ सकते हैं आपके. बेसिकली कोलैबोरेशन की जब आप बात कर रहे हो, जो थर्ड सी की आप बात कर रहे हो, तो मे बी व्हाट आई वुड लव टू इज की मे बी कोऑर्डिनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एज एन एनजीओ जो है, और कैसे हम साथ में मिलके जो अवेयरनेस एस्पेक्ट है, एक तो अवेयरनेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Just this thing I'll tell you. I think what will be really important and great if you can do is, take all the schemes and let us know how have those schemes really worked in different districts. Who are the ones you would really want to collaborate? Which are the places where that is the maximum uptake or the minimum uptake? Because if that is valid, then what you're doing will be of great value. Because what we want at MahaPicoNet and with SDMA is very clearly a disaster planning, preparedness focus. So, because we are not working on things that are not directly related. Because that is, all NGOs have their own priorities. Definitely. So if you can come back to us with something like this, we are happy. Definitely. So ma'am, just two things. One is we have done multiple financial awareness camps across India. So with basic सा हो गया, बैंक कैसे खुलवाना है, यूपीआई कैसे करना है, वैसे ही हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं डिजास्टर अवेयरनेस कैंपेन को लेके. That is one thing that can be done with every one of you. Great. Secondly, किसी ने पॉइंट आउट करा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में. सो पीएमजेजे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ती स्कीम्स हैं गवर्नमेंट को, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उनको उनके लिए अप्लाई कैसे करना है. Great.
लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स जो है वो वेरी रेडिली, मतलब 20 रुपए के अंदर आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, which Sure. is so So easily again, available. in interest of time, Yes. accept it. We will definitely can talk further. Sure. And thank you very much for sharing. Thank it. you. Yeah, thank you very much. Okay, I think we will now continue with the program. Thank you all. Please give yourselves a round of applause. I think we had very good discussion, sir. What do you think? Yeah, right? Yes, yes, please. By the time she prepares for PPT, no, I will just share my Twitter account. That is at SDMA Maharashtra. I request all of you. Still, I waiting for blue tick and $8 fee. I will get it. But at SDMA Maharashtra is a Twitter account. I request all of you to follow, and we can interact through that portal. Any suggestions you can tag to me through any of your suggestions, and please follow us there so that we can remain always connected, we can communicate and then collaborate. Thank you. कितना है? 10-12 हमारे फॉलोअर है. आप सब जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमें. ऐसा invitation Isn't it? There's no doubt about that. ना सब आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Okay, thank you very much. So thank you so much, Karen ma'am, and all the members and all the DDMOs, DDMCs, and Mahapiconet members as well as GC members who have joined us today online. So इसके आगे हम हमारे जो रिप्लाईज है GC मेंबर्स के, वो बॉक्स में कुछ रिप्लाईज आए हैं वो देखेंगे ताकि उनके भी पॉइंट हम कंसीडर कर सके. Okay, okay, fine, fine. Yes, yes. So I will request Nalini ma'am, State Consultant, DRR, UNICEF, to present. Thank you very much. I hope I'm audible to everyone. And so basically, given that we have time constraint, I'll just quickly tell you all कि और हिंदी में रखती हूँ discussion को. तो जियो एनजीओ कोऑर्डिनेशन जो एक एनडीएमए के should I shift here? Yeah, please tell me. Okay. Okay. तो जैसा कि हमारे डिस्कशन में अब तक काफी आ चुका है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है जब हम गवर्नमेंट और एनजीओस के साथ में कोलैबोरेशन की बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू डिजास्टर रिस्पांस एंड रिकवरी. तो रिगार्डिंग दैट इन Ratnagiri district, the GeoNGO coordination pilot project was started by UNICEF and with the coordination of the the district administration and DDMA of Ratnagiri. So we will please go to the slide. So you can skip this. Yeah. So basically, जो हमारा act है, Disaster Management Act, उसके अंदर में under various sections of the act, section 38, 22, and 30, it guides us to have to the government of the state government and the district authorities to work in collaboration with the NGOs with regards to reducing the impact of disasters when it comes to impact on communities. उसके साथ ही साथ में जब 2021 में
एनडीएमए ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड किया था टू हैव अ जियो एनजीओ कोऑर्डिनेशन सेंटर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन सिमिलरली महाराष्ट्र एसडीएमए ने भी 2021 में सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को जियो एनजीओ कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए गाइडेंस किया। क्यों हमें जरूरत है जियो एनजीओ कोऑर्डिनेशन की? सो दैट जो सोशल और इकोनॉमिक रिकवरी होती है डिजास्टर्स के बाद में उसको स्पीड अप किया जा सके, उसे जल्दी से जल्दी जो लॉसेस ऑफ लाइव्स इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, गवर्नमेंट इन गाइडेंस टू द एनजीओज एंड एनजीओज विद देयर एफर्ट्स मिल करके उस जो रिकवरी का टाइम है उसको स्पीड अप किया जा सके। साथ ही साथ में एनजीओज के सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन सेंटर में कि एनजीओज कम विद वेरियस बैकग्राउंड्स, तो उन सारी एक्सपर्टीज सेक्टोरल एक्सपर्टीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ में प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए। देन एनजीओज हैव अ वाइडर आउटरीच, दे कैन रीच टू पीपल, सर्टेन पीपल एंड कम्युनिटीज, जहां तक कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में शायद लोगों को ना पता हो, बट थ्रू एनजीओज वी कैन अवेयर पीपल, वी कैन गिव देम दी गाइडलाइंस टू हाउ टू आप कैसे उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, अपनी रीच बढ़ा सकते हो, और साथ ही साथ में जो कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच होता है एनजीओज का उसको भी एनजीओ को उसको इम्प्लीमेंट करके जो हमारा एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसको अचीव किया जा सकता है। So the Ratnagiri pilot project which started with in Ratnagiri, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस को लेकर के उसको एनहांस करने के लिए, तो हमने जो एनजीओज है रत्नागिरी में उनके साथ में उनकी मैपिंग की। हाउ वी डिड दैट? टू इन पार्टनरशिप विद दी देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन रेडार इंडिया, सो उनके साथ में हमने किया है, और गूगल फॉर्म्स के थ्रू वी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम एनजीओज so that they can become part of this coordination center. And then final count के बाद में 37 member NGOs were became part of this. Why have we selected Ratnagiri? क्योंकि Ratnagiri, I think my colleagues, esteemed colleagues here from Ratnagiri know better कि Ratnagiri में कितनी ज़्यादा challenges हैं disaster को लेकर के। तो जो उसकी profile है, that profile itself is makes the district very prone to various kinds of disasters. तो उसमें से flooding, cyclone और कुछ कुछ एरियाज हैं जैसे कि राजापुर, चिपलून, खेड़, ये सारे फ्लड प्रोन एरियाज हैं। साथ ही साथ में चिपलून एक इंडस्ट्रियल हब भी है, तो वहां पर नेचुरल डिजास्टर्स के साथ में मैन मेड डिजास्टर्स, सॉरी इन ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स होने के भी काफी ज्यादा इवेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए गिवन लुकिंग एट द प्रोफाइल ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, इट वाज चूजन फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो So this is just an overview of all kinds of disasters that are there in Ratnagiri. जैसा आप देखोगे फ्लड्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, इन सभी में उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिजास्टर, अकरेंस ऑफ अ डिजास्टर बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ में व्हेन वी स्पीक ऑफ नेचुरल वाटर स्कैरसिटी, डिजीजेस आउटब्रेक या फिर रोड एक्सीडेंट्स, और साथ ही साथ में केमिकल एक्सीडेंट्स, उनकी भी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज आवर स्टेक होल्डर मैपिंग फॉर दिस पायलट प्रोजेक्ट। तो उसमें से 16 NGOs आर फ्रॉम रत्नागिरी तालुका, देन 11 आर फ्रॉम चिपलून, 3 आर फ्रॉम खेड़, 5 आर फ्रॉम संगमेश्वर एंड 2 आर फ्रॉम लांजा तालुका। तो ये एक मैपिंग प्रेजेंट करने के लिए था, जिनमें से कि ऑफ 9 तालुकास, 5 these NGOs represent 5 तालुकास, और साथ ही साथ में इन एनजीओज की रीच जो है वो मोर देन 1940 विलेजेस में है रत्नागिरी के, और साथ ही साथ में जो चाइल्ड लाइन है 1098 उसकी भी काफी ज्यादा रीच है। एंड देन रिलायंस फाउंडेशन जो है उसका काफी ज्यादा फिशरमैन फैमिलीज के साथ में वर्क है। सो दीज आर दी सेक्टर्स ऑफ वर्क। तो आप देखोगे कि डिजास्टर रिलीफ, रिकवरी एंड लाइवलीहुड्स में मेनी ऑफ द एनजीओज आर वेरी एक्टिव इन दीज एरियाज, एरियाज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, वॉश, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन को लेकर के जो वर्क है एनजीओज का, वो उसमें ज्यादा और ज्यादा थ्रू दिस कोऑर्डिनेशन सेंटर वी विल ट्राई की और ज्यादा एंगेजमेंट किया जा सके। नेक्स्ट प्लीज। देन वी स्पीक ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजास्टर रिस्पॉन्स।
So most of the experience comes from the field of food distribution, search and rescue. So again, response पर बहुत ज़्यादा focus है, whereas through this question we are trying along with response, disaster preparedness को लेकर के भी जो engagement of NGOs है उसको बढ़ाया जा सके. So basically through this mapping we are trying कि जो एरियाज हैं वो हमें भी पता चल रहे हैं कि अच्छा इन एरियाज में और ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है एंड इन एरियाज में और ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है. सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्पीक ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, सो 78 human resources are trained in disaster preparedness and response, search and rescue, first aid, fire safety. These are the areas जिनमें वो trained और इसमें और ज्यादा ट्रेनिंग हम की जा सकती हैं. So now I'll come to the role of the district administration in this coordination center. Is my voice clear? Okay. So basically the role would be that RDC जो है residential district collector, she will be the nodal officer for this GeoNGO. Then the DDMO will assist the RDC for their coordination process on day-to-day activities. The DDMO will prepare a comprehensive plan for the NGO's engagement, and the DDMO will also seek consultation from NGOs in order to develop action plan in the pre, during and post-disaster phase. Then responsibilities, the district administration has the most responsibilities when it comes to the proper implementation of this coordination center. So for example, effectively utilizing the information and knowledge gained from their areas of operation, उसको coordinate करना, NGOs के साथ implement करना. Then risk informed decision making and risk informed disaster management efforts को implement करना. Then guidelines development करना, NGOs के साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके engagement को बढ़ाने के लिए NGO representatives के साथ में periodic consultation करना, review meetings करना, and साथ ही साथ में उनका जो काम है उस पे feedback gain करना so that it can be improvised. Then the district administration will publish a list of all NGOs with their contact details on the website. Why it is important? So that in case of any emergency, they are easily accessible. Then which will also include a list of available resources, equipment, and etc. So next, please. This is a very exhaustive list. So instead of going through the list one by one, by each point, role of NGO members will be in 3 phases of disaster risk reduction and management. So first would be in the pre-disaster phase, where we prepare for reducing the risk of a disaster, on receiving warnings during the disaster, and then in the post-disaster phase, जहाँ पे कि disaster होने के बाद में हम उसके जो mitigation है, उसका जो impact है, उसको कम करने के लिए किन activities को कर सकते हैं member NGOs, उनके बारे में है. So pre-disaster phase is basically preparing during when you received or experienced a disaster, उस time पे how you will function. And post is after the disaster, reducing the impacts of the disaster. This is an exhaustive list, so it will be discussed later on. And then role of SDMA. So SDMA is another very important, in the state, it is one of the important authorities when it comes to disaster management. So the basic role is to provide guidance to DDMAs and NGOs both, conducting workshops and periodic reviews with the district administration to NGO members, and this would be in partnership with in collaboration with the MahaPicoNet, क्योंकि MahaPicoNet के through हमें काफी सारे NGOs connected हैं, even in areas of Maharashtra जहाँ पर की impacts, जहाँ पर की किसी तरह का disaster होने के chances बहुत ज़्यादा हैं. So उसके साथ में consultation to those members who are working in different parts of Maharashtra उसे कर सकते हैं, उसे करना चाहिए. एंड साथ ही साथ में मेंबर एनजीओस को सेंसिटाइज करना, उन्हें अवेयर करना, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं जिनके बारे में मेंबर्स आर नॉट अवेयर, जिनके बारे में अवेयरनेस लाने की जरूरत है सो दैट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके. उनके अवेयरनेस पे थ्रू प्रोवाइडिंग आईईसी मटेरियल टू एनजीओस वो कर सकते हैं. एंड देन जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टास्क फोर्स होती है उसमें एनजीओस को इंक्लूड करना सो दैट while they are responding to a disaster, और या फिर जब needs assessment होता है उसमें ज़्यादा NGO members का involvement हो सके. And then again providing certificate to member NGOs for actively participating in the coordination center. So since NGOs work
towards disaster risk reduction, and they put lot of efforts also from their end कि इनके जो किसी भी आपदा के जो risk को कम करने के लिए. So to appreciate those efforts, certification should be provided, and I think I would like to conclude here. However, this is based on our experience from the Ratnagiri pilot project, and it is open to feedback from all of you. And also, आपको अगर कहीं पे है कि instead of this, we can make such an intervention जिससे कि वो effectiveness ज़्यादा बढ़ेगी. That can also be added into it. So thank you very much, and I'll open it for feedback. Thank you. Thank you so much. We will do that. So thank you so much, Nalini ma'am, for showing us the PPT and the example of the geo-NGO coordination of the Ratnagiri district. हमारा आज का मतलब ये राउंड टेबल का ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कैसे हम सुबह से मतलब जब से आया तब से बात करें कि कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनजीओज, एंड एक और एक पार्ट आया था कि कम्युनिटी को साथ में लेके कैसे जाना है. तो उन्होंने जो एग्जाम्पल शेयर किया, अभी आपने जो डेटा देखा या आपने जो पूरे स्ट्रक्चर देखे, तो वो उसी के बारे में है. तो क्या हम इसको अच्छे से रेप्लिकेट करने के लिए एज अ एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और सिटीजन कैसे काम कर सकते हैं मिलके. सो ये हमें देखना है. सो ऑनलाइन भी हमें बहुत सारे रिप्लाई आएंगे. जैसे मैम ने कहा कि रिपोर्ट आपके साथ इसका शेयर किया जाएगा, सो उसके माध्यम से आप वो सब पढ़ सकते हो. अभी एक लास्ट रिक्वेस्ट ये होगी कि आप में से जो डीडीएमओज यहाँ पे आए, मैं मेंशन करना चाहूंगी खास करके कि कोकन के पूरे डिवीजन के सारे डीडीएमओज यहाँ पे है. सो रायगढ़, रत्नागिरी के सर, हमें अभी सूर्यवंशी सर ने हमारे साथ बात की. उसके बाद मुंबई है, मुंबई सबर्बन है, पालघर है, पालघर के डीडीएमएस हमारे साथ है, कोकन के डीडीएमसी हमारे साथ है, और सिंधुदुर्ग से जैसे मैंने कहा मैडम आई है, अनिता मैडम है थाने से. सो कोकन डिवीजन के पूरे डीडीएमओज है. कोल्हापुर से खास सकपाल सर को इनवाइट किया गया था और ही इज देयर फ्रॉम द कोल्हापुर. सो मैं बहुत खुश हूँ. पुणे से बनोटे सर आए हैं. ऐसे करके हमने आज एक शुरुआत की है कि बिटवीन डीडीएमओज और डीडीएमए और हमारा महापिकोनेट का नेटवर्क कैसे होगा. तो please big round of applause for the DDMOs who have come here, and SDMA ऑफिस की इन्होंने हमें इजाजत दी, हमारे साथ हैंड होल्डिंग किया कि ये सब हो सके. विदाउट उनके परमिशन ये ना हो सकता था. और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनके इनपुट्स हमें मिले हैं. सो अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है यहाँ पे, सो प्लीज सर आपली ओळख पण कर. मी विवेकानंद, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी. तसा पूर्ण कोकण डिव्हिजन मध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात हजार्डियस जिल्हा म्हणून ओळखला जातो माझा पालघर जिल्हा. जवळपास 30 लाख लोकसंख्या आहे 2011च्या गणनेनुसार. 120 किलोमीटरचा समुद्र किनारा, 5757 कंपनीज, आणि त्याच्यातल्या 288 कंपनी अशा आहेत की ज्या हजार्डियस केमिकल आहे. NH हायवे जिथे तलासरी जो भाग आहे मेंढवणचा, तिथे जुन्या म्हणजे 1982 पासूनची हिस्ट्री आहे की तिथे केमिकल टँकरचे खूप अपघात होतात. आणि याचबरोबर भूकंप हा म्हणजे जसा पालघर जिल्हा नवीन फर्म झाला त्याच्यानंतर सुरुवात झाली भूकंपाला
2017 पासून, म्हणजे तो त्याच्या 5वीला पुंजलेला असं म्हणतो आपण, असं म्हणू शकतो. आणि तो भाग आहे जिथे 11/11/2018 पासून आजपर्यंत जवळपास 1000+ अर्थक्वेकचे ट्रेमन्स आलेले आहेत, स्वॅम ऍक्टिव्हिटीज. तर या गोष्टी आहेत. त्याचबरोबर माझे तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आहे. तो सगळ्यात आपण म्हणू शकतो की बाबा काही इमर्जन्सी जर झाली तिथे, तर तुम्ही त्याच्यासाठी कसं प्रिपेअर व्हाल, किंवा तुम्ही तिथल्या लोकांना इव्हॅक्युएट करण्याकरिता मग तुमच्याकडे काय म्हणजे तुमची काय प्रोव्हिजन्स आहेत. तर मला माझ्या पालघर जिल्ह्यातल्या सर्व ज्या एनजीओज आहेत ना, त्यांना एक रिक्वेस्ट करायची होती की मी जो एक प्लॅन बनवलेला होता, त्याचा इव्हॅक्युएशन प्लॅन, तो 2011च्या जनगणनेनुसार बनवलेला होता. पण आत्ताचा जो प्लॅन मला बनवायचा आहे, कारण आता त्यांचं कसं 16 किलोमीटरच्या रेडियस पर्यंत होतं, पण आता त्यांनी केंद्र शासनाने वाढवून त्याला 18 किलोमीटर केलं. पण 18 किलोमीटरच्या बाहेर मला माझ्या 18 किलोमीटरच्या परिघामधले जे लोक आहेत त्यांना तिथून बाहेर तिकडे शेल्टर करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी इव्हॅक्युएशन रूट्स असतील, बाहेर शेल्टर प्लेसेस असतील. मग प्रत्येक गावामधले 16 किलोमीटरच्या परिघाच्या बाहेर जे गावं आहेत त्या गावांमधल्या जे पब्लिकच्या म्हणजे पब्लिक सेक्टर मधले जे ऑफिसेस आहेत पब्लिक सेक्टरचे, त्याचबरोबर तुमचे गव्हर्नमेंटच्या जे बिल्डिंग्स आहेत त्या असतील, एनजीओच्या काही बिल्डिंग्स असतील, त्याच्यानंतर कम्युनिटी हॉल असतील. तर याचा डेटा मला कलेक्ट करण्यासाठी आपली खूप मोठी आवश्यकता लागणार आहे. आणि ते जर भेटलं तर आपल्याला एक व्यवस्थित मोठा प्लॅन बनवता येईल, चांगला प्लॅन बनवता येईल, जेणेकरून अफेक्टेड गावातल्या अफेक्टेड सेक्टर मधल्या लोकांना आपल्याला इव्हॅक्युएट करणं सोपं जाईल. आणि हे जवळपास 83 गावं आहेत जे 16 किलोमीटरच्या सेक्टर मधले आहेत, 16 किलोमीटरच्या परिघामधले. तर याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला म्हणजे आमच्याशी कोऑर्डिनेट करा आणि ते गावं वगैरे फाइंड आउट करण्याचे प्रयत्न करा. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर, आपला मुद्दा मांडल्याबद्दल. नक्कीच आपण ह्या प्लॅटफॉर्म थ्रू प्रयत्न पुढे चालू ठेवू. मी याच्यानंतर आमंत्रित करेन युसुफ सरांना. तत्पूर्वी मला असं वाटतं की आपण प्रत्येकाची दखल घेतो की नाही. सो ऑनलाईन जी लोक जोडली गेलेले आहेत, मी मुद्दा म्हणून उल्लेख करीन नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबादचे DDMCs जे ऑनलाईन जोडले, सगळे DDMO, सगळे जे, मी आता सगळे जिल्हे नाही बोलू शकत इकडे, परंतु जे आपले 36 जिल्ह्यांपैकी 9 इथे उपस्थित आहेत आणि उरलेले जे जिल्हे इकडे आहेत, सो त्या सगळ्या जिल्ह्यांच्या DDMOंचा माझा खूप खूप महापिकोनेट तर्फे राईज पिको वर्ल्ड मध्ये आणि राईज समिट मध्ये ह्या राऊंड टेबलला ऑनलाईन जोडल्याबद्दल धन्यवाद. मी आता आमंत्रित करीन युनिसेफच्या युसुफ सरांना टू कन्क्लूड द सेशन. थैंक यू धुला सर. मंत्रालय से निकलना हमेशा मुश्किल होता है और निकलने के बाद अच्छा भी लगता है. तो I won't take much time. I'll try to conclude in 5 minutes. Oh, camera. Okay, fine. No issue. 5 minutes. तो मैं 3 चीजों में बारे में बात करना चाह रहा था कि एक है कि धुलत सर ने भी कहा, सरबजीत ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेशन के बारे में, आप लोगों ने भी कहा कोऑर्डिनेशन के बारे में. ये जो DDMA है, ये DDMA एक्चुअली 1 मैन है 1 वुमन जॉब ही है. सचमुच बता रहे. तो थोड़ा फ्रैंकली बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत. इतना तो अच्छा बात कर, तो मैं थोड़ा फील्ड का आदमी हूं तो थोड़ा फ्रैंकली बात करता हूं. तो अल्टीमेटली आप ही लोग पूरा सब कुछ देख रहे हो, तो थोड़ा हमको स्मार्ट भी होना पड़ेगा. और आप लोग स्मार्ट हो. मेरा मित्र कोल्हापुर में हम लोग काफी बार पहले चुके हैं, 17 साल से है DDMO करके. हमको दूसरे से काम करवाना है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट, हम लोग जितना भी बोले कि डिजास्टर इज ए पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो हुआ नहीं है अभी तक. सेंडाई में भी बात हो रहा है. सर ने जो कहा सुबह मतलब दोपहर कोई की there were more than 1000 incidences and more than 800 deaths, and all 800 deaths are preventable deaths. अगर आप लोग ध्यान से देख सोचेंगे तो. लेकिन it's very difficult, ambitious for a zero death thing. Odisha government is trying hard. Little bit थोड़ा बहुत जा पाए हैं, लेकिन still Maharashtra, Gujarat, Odisha, Kerala, Tamil Nadu, they are trying hard. But yes, it is a very big for a zero death. लेकिन who are the first responders? गांव में पहले कौन जाते हैं? मैं सांगली, कोल्हापुर का काफी सारे रिवर एंड फ्लड में मैं कर चुका हूं. सरपंच, ग्राम सेवक तो है ही,
लेकिन सबसे पहले आशा आंगनवाड़ी ताई सबसे पहले पहुंचते हैं। दे आर दी अर्ली रिस्पॉन्डर्स। फिर उसके साथ साथ युवक लोग तो है ही, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि जो आपके जो गणेश मंडल के जो लोग होते हैं, मैंने काफी देखा है, उन लोगों ने पहले 3-4 दिन एनडीआरएफ का बोट सांगली में पहुंचने में 3 दिन लगा था। 3 दिन तक गांव को लोगों ने ढूंढा था, एक भी डेथ नहीं हुआ था। एक डेथ जो भी हुआ था ड्राउनिंग से हुआ था, वो बोट उलट गया था। was not a death related to hazard। तो गांव को लोग चाहे तो सब कुछ हो सकता है। एंड मैंने देखा था, एक आंगनवाड़ी ताई के साथ बात किया था, उन्होंने खुद 3 आंगनवाड़ी का सामान निकाल के अपने घर पे डाला था। उनको पता था अर्ली वार्निंग क्या होता है, एंड शी स्टार्टेड डूइंग दिस 48 आवर्स बिफोर वाटर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो लोकल नॉलेज है, वो पहले से ही आपदा मित्र है, उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरत है। और आपदा मित्र बहुत अच्छा है, मेरे साथ सर का काफी बार बात हुआ है। हम लोगों का दोनों का ही रिजर्वेशन था कि 12 दिन के जगह वो ट्रेनिंग 5 दिन का या 6 दिन का होना चाहिए। 12 दिन का ट्रेनिंग में कौन बैठेगा? 2 घंटे में ही हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो 12 दिन कौन सुनेंगे? तो लेकिन हुआ नहीं है, सर ने भी बहुत कोशिश किया था। लेकिन आपदा मित्र में एक चीज देखिए, युवा है, बाद में ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ मित्रों से बात कर रहा था, और उसको टेबल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो हम लोग कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, वॉलेंटियर में काम कर रहे हैं। तो हम लोग अकाउंटेबल किसको कर सकते हैं? आशा को कर सकते हैं, आंगनवाड़ी को कर सकते हैं, ताई को कर सकते हैं, एएनएम को कर सकते हैं, टीचर्स को कर सकते हैं। तो क्या ये जो ट्रेनिंग जो कुछ है, क्यों ना इनके साथ भी हम लोग जुड़े? क्योंकि ये लोग गांव में, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले। टीचर्स अगर एक डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा ना, महाराष्ट्र के बाहर तो नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सोचिए कि रूटीन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनको कैसे जोड़े उनके साथ। देन ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, वो लोग जूझ रहे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ तरीके से, जैसे बोलते हैं ना हम लोग जुगाड़ में माहिर है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उसको क्या हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच से ले सकते हैं क्या? नहीं। ये ह्यूज फोर्स, आशा आंगनवाड़ी टीचर्स का सारे ह्यूज फोर्स है। और बेस्ट इज दैट वो लोग उसी गांव से है। टीचर्स अगर नहीं भी हुआ, लेकिन आशा आंगनवाड़ी एएनएम तो उसी, उनका इंडिकेटर ही हुई है लेने के लिए, उसी गांव से है। जल सुरक्षक है, स्वच्छाग्रही है। तो ये जो बिकॉज पेड पीपल, उनको पैसा मिलता है, कम हो ज्यादा हो, लेकिन उसको आप अकाउंटेबल कर सकते हो, क्योंकि वो सरकारी ढांचे में आता है। अब अभी हम लोग जो यूथ के साथ कर रहे हैं, वो वॉलंटियर है, सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसको अगर वो काम नहीं करेगा तो आप उसको ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हो। ग्राम सेवक, सरपंच काम नहीं करेगा तो बीडीओ, एक्सटेंशन ऑफिसर बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो इसका ये सोचिए थोड़ा। और सर यशोदा में जो ग्राम सेवक और सरपंच का जो ट्रेनिंग होता है, मैंने खुद 2-3 ट्रेनिंग में गया हूँ। ट्रेनिंग का जो आपका क्वालिटी है बहुत ही मोनोटोनस हो गया है। तो यशोदा में जो ग्राम सेवक सरपंच का जो डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग होता है, उसमें डिजास्टर का जो चैप्टर है, उसको थोड़ा देखने का बहुत जरूरत है। प्रिपेयर्डनेस, रिलीफ, रेस्पॉन्स, क्योंकि हमेशा ट्रेनिंग होता रहता है। और यशोदा में एक विंग पहले से ही बना हुआ है, तो अगर उसको हम लोग सेट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक लास्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में हमारा जो सर ने जो कहा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है, हमारा एक लिमिटेशन है। सीओ का एक लिमिटेशन है, कलेक्टर का लिमिटेशन है, डायरेक्टर का भी एक लिमिटेशन है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखा कि डिजास्टर का जब भी डिस्कशन होता है, सीओ का डिस्कशन तभी आता है जब डिजास्टर हाथ से बाहर निकल गया। सीओ तभी इन्वॉल्व होते। कोविड सीओ कब इन्वॉल्व हुए? जब कलेक्टर अकेले संभाल नहीं पाए, तभी सीओ आए। तो आपका जो रूटीन कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, मंथली मीटिंग, विच इज जिला परिषद सीओ, उसमें क्यों ना हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का पीस टाइम प्लानिंग क्यों ना बात हुआ। व्हाई इट विल बी ओनली डिस्कस्ड विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। जो इस टेबल से एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये करेगा कौन? अगर बीडीओ, एक्सटेंशन ऑफिसर और सरपंच के दिमाग में ये चीज घुस गया, तो आपको कोई भी मित्र नहीं चाहिए, अपने आप एक सकता है। लेकिन उसको घुसाने के लिए हमको सीईओ को टारगेट करना बहुत जरूरत है। क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में ऐसा है कि सीईओ विल सी डेवलपमेंट प्रोग्राम,
and collector will see revenue, industries and law and order and disaster because as per the DM Act. लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा है कि कलेक्टर एंड द सीईओ आर द सेम पर्सन, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो सर ये चीज भी आप ऑनरेबल पीएस सर से बात कर सकते हैं, आप लोग भी कीजिए कि अगर मंथली कोऑर्डिनेशन मीटिंग में क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट के लेके क्यों नहीं बात होगा, तो ऑटोमेटिकली जो बात आ रहा था कि जो डिस्कनेक्ट है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक टू द विलेज, दैट डिस्कनेक्ट विल बी एड्रेस्ड। बिकॉज अगर एक वीडियो कुछ बोलता है तो सारे सरपंच को, ग्राम सेवक को सुनना पड़ता है, बिकॉज अ वीडियो कैन शो कॉज अ ग्राम सेवक, क्योंकि सरकार में कुछ चीज डंडा से चलता है, तो कुछ समय डंडा का भी जरूरत पड़ता है, और डंडा तब नहीं निकलना चाहिए जब हाथ से सब कुछ निकल गया। अगर ये रेगुलर ग्राम सेवक सरपंच, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का बात हो रहा था, जो सांगली में जो नैको का प्रोग्राम बता रहे थे वो HIV एड्स का, वहां पे भी वही था कि पंचायत को अकाउंटेबल बनाए गए थे। मुझे याद है जब कोविड के समय एक नारा निकला था कि गांव का सरपंच इस गांव का कलेक्टर, तो सिर्फ वो कोविड के समय क्यों है, रूटीन पीस टाइम प्लानिंग में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से सोचिए, क्योंकि जितनी भी हो जाए दुल्हा साहब आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। आप लोगों को एनजीओस का भी है कि यहाँ पे काफी एनजीओस है, अच्छे एनजीओस है, लेकिन ऐसे भी एनजीओस है सिर्फ डिजास्टर के लिए वेट करते हैं। They pop up only when disaster happens because everybody loves a good drought or a good flood for many reasons. But you need an NGO जो हमेशा 12 महीने आपके साथ रहेंगे। तो आपको दोस्त चाहिए, दुश्मन नहीं चाहिए। दोस्ती बनाए रखिए, सारे डिपार्टमेंट से बनाए रखिए, लेकिन आप लोग ज्यादा डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट के साथ ज्यादा समय बिताइए। नहीं तो क्या होगा, ये लोग रूटीन डिस्कशन में आपका जो डिजास्टर वाला जो मेन मुद्दा है, इट्स नॉट ओनली ऑन रिलीफ एंड रिस्पॉन्स। अभी जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का हो रहा है बात, पिछले साल वी आर लकी कि महाराष्ट्र में फ्लड ज्यादा हुआ नहीं, जितना भी हुआ थोड़ा बहुत आखिर में आपका विदर्भ में भी हुआ। लेकिन अगर हमारा 2019-20 जैसा हालत होता तो पीडीएनए में आपको समझना पड़ता है, सांगली कोल्हापुर सब आ जाते। पीडीएनए का पहला बात जन लॉस असेसमेंट, इट डजंट स्पीक अबाउट रिलीफ एंड रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, यही मेजर चीज है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर मैनेज any kind of hazards and shocks in future। तो मुझे लगता है कि लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे सिस्टम तैयार करना बहुत जरूरत है। सीएचओ का बात तूने कहा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था आयुष्मान भारत में। ये सीएचओ का कॉन्सेप्ट कोविड के टाइम, अगर हम लोग एक स्कूल को अगर कोविड केयर सेंटर बना सकते हैं, अगर एक सरपंच को पता है कौन सा दवाई कौन सी समय देना है, मैंने खुद जाके देखा है, वो आपका जो दक्षता समिति था, तो ये हम लोग करके दिखाए हैं। हाँ, कोविड में हम लोग क्या होता है, जब तक कोई मतलब जान हानि नहीं होता तब तक समझने, लेकिन जान हानि के वेट करने का जरूरत क्या है, क्योंकि सर ने जो डेटा बताया 835 का, वो पेपर में आता नहीं है। अभी भी हर दिन महाराष्ट्र में कम से कम 500 से 600 लोग मर रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजन, डायरिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, लेकिन वो मीडिया में नहीं आता है। There is lot of silent deaths। तो अगर कोविड में हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आप ही लोगों ने किया था, क्योंकि यू कैन क्लैप फॉर योर ओन सेल्फ। क्योंकि आई रिमेंबर मैं कोविड के समय बहुत क्लोजली काम करता था, तो ऑल द डीडीएमओज आर वेरी मच एक्टिव। तो यही मेरा है कि थोड़ा सोचिए, वी हैव टू थिंक लिटिल बिट स्ट्रेटेजिकली, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, बाकी डिपार्टमेंट का दोस्त बनना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सीईओ को थोड़ा इन्वॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्राम कम्स अंडर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसको जब तक हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ वो साल में 2 ही महीना आप लोग का इंपॉर्टेंस। मेक योर सेल्फ इंपॉर्टेंट टू द जिला परिषद, अगर सिर्फ कहा जाए, आप अपने आप को सीईओ और कलेक्टर के साथ इंपॉर्टेंट करके दिखाओ 12 महीने के लिए, नॉट ओनली फॉर 2 months ऑफ डिजास्टर। सो I thanks RISE team and also all the DDMOs, and especially Dhula sir for taking his time out from the busy schedule। और धुला सर भी बताए, अभी जो पैलाडियम करके एक ऑर्गेनाइजेशन आए हैं स्टेट्स में से, तो हम लोग वी आर होपफुल कि बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाले हैं। सर भी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा टीम और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। क्योंकि डिजास्टर हैपेंस, बट एज पर द साइकिल ऑफ द साइक्लोन, पिछले 3-4 साल में साइक्लोन हुआ नहीं है,
So you can expect something is coming this year. Sorry to say that, but this may happen because typical cyclical in nature. Drought काफी साल हुआ नहीं है. We don't know. We are lucky. The 5 साल drought नहीं हुआ है. So it may come. So we have to be very prepared. Already तो 10 डिस्ट्रिक्ट ने ऑलरेडी काम शुरू वेव को लेके, क्योंकि ऑलरेडी कल ही पेपर में आया था एल लीनो का चालू हो गया. तो आपने देखा होगा लास्ट 3 दिन में मुंबई में टेम्परेचर 8 डिग्री 28 से 6 डिग्री 28 जो हाईएस्ट होता था अभी 34-35 में चला गया जस्ट लास्ट 3 दिन में. थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शिल्पा and also entire RISE team, and thank you madam for hosting us also as an amazing institute. Thank you. We are honored. Actually, I could not attend the entire program, but whatever little I have attended, I am really delighted to listen all those conversations. And our heartfelt thanks to sir, all of you that you came here. And we would love to sit with you and discuss about this. My students, those who are working here as volunteers, they are working for the social committee. And we have adopted villages also where we are doing the baseline survey. And we are trying to identify the problems there under the Unnat Bharat Abhiyan. And these are the students who are going to work with me on that. Besides that, we have already adopted few villages for years altogether. And we have done a lot of work there. But it is always there is a scope for learning. And our students are so happy to help all of you to do the research work or any responsibility you would like to share with them. So I offer my services here with my students on behalf of them. So you are feel free to call us for the research work because these are the MBA students. They are going to be the manager in the industry. All are doing MBA from University of Mumbai. And I'm really proud of my students that whenever I ask them to do work for any program, they have taken the full responsibility. That's why I could take my session as usual because they were there. So thanks to all of you for coming here and sharing your thoughts with us. And those who are joined online, I really thank you all also. And whatever we can do with you, we are always there to support it. Thank you so much, sir. सो मी अनाउन्स असं करीन ह्याच्यानंतर आपलं सेशन कन्क्लूड झालेलं आहे. सरांनी क्लोजिंग रिमार्क दिलेले आहेत.